the war started in Gaza, so we should leave Gaza to have peace or to have or to be comfortable or to be alive in another place. So we came here to Pakistan to continue our education. Me and my husband. I'm going to study master degree here in computer science at Rafa University, inshallah. No one can imagine how you can leave your home, your country, your house, your beautiful people that you have loved before. I will study master media study, دراسات إعلام in Arabic language. The people in Pakistan is very beautiful and lovely. In Gaza, in the war, my cousin or 70 person in my family was killed Israeli بسبب الاحتلال الإسرائيلي. I'm BBS student at GSMU. I'm here since three years. I graduated from Gaza, then come to Pakistan. We lost our home, but it's fine because my family is fine, alhamdulillah. But they cross a hard time. It's really hard. It's difficult with the food and everything they face is hard for them. In these days, it's so hard to contact with them. But at previous time, yani, we talk together a lot. But now, because of the war and the connection problems and the internet problems, we cannot talk as a previous time. I'm here to achieve this degree by Al Khidmat Foundation, and I'm seeking to develop my skills and my expertise to help my people in Gaza, inshallah, as well as we all plan to return to Gaza after this war to help our people also. هي كتجربة إنك تدرس بعيد عن عيلتك هي أصلاً صعبة، بس لما إجت الحرب الأمور صارت أصعب. أنت حتى ما بتقدر تاخد support من العيلة، وبالعكس طول الوقت في مشاعر خوف، في تشتت. أنت مش مطمن إنه أهلك بخير. الاستهداف كان من الاحتلال، كان متعمد يقطع الكوميونيكيشن واي وسيله اتصال توصلنا باهلنا او عائلتنا او توصل صوت اهل غزه برا غزه. حاولوا كثير يقطعوا صوتنا عن العالم، بس الحمد لله في كثير ناس شجاعه بغزه، وفي عنا كثير صحفيين عملوا كل اللي بيقدروا عليه انهم يطمنونا، يرفعوا معنوياتنا، يوصلوا صوتنا لكل العالم. तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान भर में जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं और जो फ़लस्तीन से आए हुए हैं, ख़ास तौर पे गज़ा से आए हुए हैं, वो 350 से ज़्यादा हैं। और इन बच्चों की कफ़ालत जो है वो अल खिदमत कर रही है। बच्चों की आमद का सिलसिला जारी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो मिस्र में ही एडमिशन हो जाता है और वो कायरो में या दीगर शहरों में कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं। जिन का वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाता है तो वो फिर पाकिस्तान के लिए या किसी और जगह के लिए ट्राई करते हैं, तो उनको फिर उनकी फ़्लाइट काहिरा से ही अरेंज की जाती है। काहिरा से फिर वो वाया UAE के या किसी गल्फ़ कंट्री की सर्विसेज लेके वो यहाँ तक पहुँचते हैं।